Dear student, this is biology new book according to the new curriculum. It also has same number of the chapters. Means the last book, which was prescribed by the Sindh board and the curriculum, that book was also contained 14 chapters. It also contained 14 chapters. But the difference is there. The first difference is that we haven't discussed what is biology. You have already studied the biology branches of biology, all these things. You have already studied in your first chapter. I always say that if you want to understand biology, you have to understand in every walk of life, wherever you will be, either in your medical college, either in pharmacy or in other biological sciences, you have to understand the molecular aspect of the living organism at the moment. So the first chapter is here, the biology. In the last book we have also the biological molecule, but not in very much detail. The chemistry was simple. But here a little more complex, a little more chemical approach is here. That's why this biological molecule chapter is most appropriate chapter. The second chapter is more or less same as the enzyme. The third chapter in the last book was the enzyme. Here it has the second chapter, enzyme. The cellular structure and function the same as the previous. But here we have given the bioanalytics, which you feel it is very difficult chapter in your last book. It's the same, but its approach is so simple. Means the write-up is so simple. The concept is the same which was present in the last book, but we have tried to make it so simple. Next, after that, after biological sciences, but then we have acellular life, which I always say it is not acellular, it is non-cellular life. So the non-cellular life, all the living things which are non-cellular, we have also discussed in our last book, but not in that much detail. But here we have discussed the details of the capsid formation, why it is called non-living, why it is called living, what are the properties, why these things are called non-living. So many people consider them non-living, so many people consider them living. We have discussed in detail. And so many things that how, if virus remain outside, how it will survive. It remains inside the host, how it will survive, how it protect from different environmental factors, and how the virus protect or the other living entities protect them from the environmental factor as well as the immune systems of living things. So how they cause infection, how they are called infectious one, how they survive in it, we have also discussed it. And in last book, we haven't discussed the life cycle and the structure of the HIV and the life cycle of the HIV and the AIDS. We have discussed AIDS, but in very nutshell we have discussed. And the other diseases we have also discussed here, the viral diseases. So it is more informative, more approachable than the last book. Now, इसके बाद जब हम बात करते हैं, तो फिर हमारे पास प्रोकैरियोट्स. अब यहाँ से हमारे पास एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम चलता है. हमने उसके अंदर जो है वो 9 के अंदर 2 किंगडम सिस्टम दिया है, फिर 9 के अंदर हमने 3 किंगडम सिस्टम दिया है, फिर 9 के अंदर हमने 4 किंगडम सिस्टम दिया है, और आपके पास फर्स्ट ईयर में रॉबर्ट वाइटी का 5 किंगडम सिस्टम था, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज सिस्टम था, लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट दिया है बिल्कुल. उसके अंदर हमने ये सारे किंगडम सिस्टम की बजाय अब हमने डोमेन सिस्टम. और डोमेन सिस्टम का मतलब है कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं. और वो ओनली एंड ओनली हमारे पास क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड्स. यानी सारे डोमेन्स को हमने उसके अंदर रखा है, यानी डोमेन्स बनाए हैं और 3 डोमेन्स बनाए. इस पुराने जितने किंगडम थे, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको हमने डोमेन. हमेशा पिछली दफा हमने जब बात की थी तो आर्किया जो ग्रुप था, यानी आर्किया बैक्टीरिया हल्का सा था. अब हमने आर्किया बैक्टीरिया को जो है वो बाकायदा इन द आर्किया डोमेन और उसके केमिकल डिफरेंसेस
उसकी एवोल्यूशन, ये अक्सर व बेशतर टीचर्स के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये उनके लिए नया, मुश्किल तो नहीं कह सकता मैं कि नया अप्रोच है, इसलिए शायद उन्हें पढ़ाने में और उन्हें ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाने में मुश्किल पेश आए, तो इसलिए जो है ये भी आपके पास आ गया। तो इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, मेरी भी अपनी ये फीलिंग थी, जब तक मैंने साइनोबैक्टीरिया को डिटेल में नहीं पढ़ा, मेरी भी अपनी फीलिंग ये थी कि इसकी सेल वॉल एल्गी की सेल, क्योंकि ये पहले कभी ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी थी, तो आई हैव अ थॉट that it is like the cell wall is like the cell wall of the plant or algae, but now whenever I have studied by myself, मेरे लिए भी नई चीज थी कि जब मैंने उसको स्टडी की तो पता चला उसकी सेल वॉल तो बैक्टीरिया से मिलती है, और उस बैक्टीरिया की सेल वॉल से मिलने की वजह से सेल भी बैक्टीरिया से मिलता है, सेल वॉल भी बैक्टीरिया से मिलती है, तो नाउ इट हैजंट गॉट द प्लेस इन एल्गी, इट हैज अ प्लेस विद द बैक्टीरिया। अब आर की बैक्टीरिया का अलग डोमेन हो गया, इसका अलग डोमेन हो गया, और जितने यूकैरियोट्स थे उनका अलग डोमेन हो गया। फिर एक काम और किया गया, क्योंकि अक्सर और बेशतर कंसीडर ये किया जाता था कि जो ये एल्गी है, फंजाई है, ये है, प्लांट्स हैं, काम अगर डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है। लेकिन मेरा हमेशा से ये रहा है, और ये मैंने इसके लिए बड़ी फाइट भी की है, कि आपका प्री मेडिकल को जो टर्म दी गई है वो ही गलत है। असल में आप बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट होते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट जो है वो फिजियोलॉजी में भी जा सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट फार्माकोलॉजी में भी जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जो इंटरमीडिएट लेवल पर हम डॉक्टर नहीं बनाते, हम बेसिक बायोलॉजिकल फेनोमेना डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए उसके अंदर हमारे पास एक कंपैरेटिव स्टडी होती है, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म नेचर के अंदर आपका रोल प्ले करते हैं, और बायोलॉजी, और अगर हम मेडिकल साइंस में भी चले जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ वाइटल रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए जरूरी है कि आप, फिर उसके बाद आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू हो गई, प्लांट फार्माकोगेनेसी हो गई, ये सारी की चीजें उसके बगैर हम नहीं पढ़ सकते। तो ये इंट्रिकेट साइंस है, अगर हमने फिर भी उसको शॉर्ट कर दिया गया है तो हम आपके माहौल, हम आपकी फैमिली, इसी सारी जर्नलाइज प्लांट्स के ग्रोथ के बहुत ज्यादा डिटेल। फिर उसके बाद जितने फंक्शंस थे प्लांट्स के, जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते थे, इंटर में पढ़ते थे, सबको एक जगह मिला दिया। इंटर के भी प्लांट्स के, फर्स्ट ईयर के भी प्लांट्स के सारे फंक्शंस एक जगह मिला के चैप्टर बना दिया गया। उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे, जैसे जो है वो आपके पास वाटर, खासतौर पर रिलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, वो पोटेंशियल। अब ये जो है बहुत कंफ्यूजिंग था, तो कोशिश की गई कि उससे सिंपल अप्रोच तक लाया जाए, ताकि जो है उससे मूवमेंट इन प्लांट्स के अंदर बात की जा सके, और प्लांट्स की नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स को जो है उसको जो है डिस्क्राइब किया जा सके। बल्कि ये सारी चीजें फिर उसके बाद जो फिजियोलॉजी है वो आपके पास डाइजेस्ट, उसको ज्यादा डिटेल किया गया है, ताकि जो है वो कौन से सेल्स डाइजेशन की, स्टमक की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्टमक के अंदर कौन कौन से सेल, किस किस टाइप के सेल्स, कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन से एंजाइम्स, सब जो है वो इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इम्यून सिस्टम को बहुत एक्सटेंसिव, ताकि क्योंकि इम्यून सिस्टम पहले बिल्कुल सिंपल सा था, इसलिए उसके अप्रोच डेवलप नहीं होती थी बच्चे के अंदर कि इम्यून सिस्टम की, तो उसको हमने कोशिश, यानी सिलेबस की रिक्वायरमेंट थी, तो इसमें भी जो है वो, तो इसलिए जरूरत पेश आ रही है कि हम क्या करें इसको। तो इसीलिए हमने खास तौर पर 2 चैप्टर्स को पहले लिया है, जो कि ए सेल्यूलर लाइफ, जिसको मैं नॉन सेल्यूलर लाइफ कहता हूँ, वो जो कि, और दूसरा जो है आपके पास खास तौर पे जो प्रोकैरियोटी, जिसको हम मोनेरा कहा करते थे, जिसमें आर्की बैक्टीरिया, जिसमें यू बैक्टीरिया, जिसमें साइनो बैक्टीरिया, ये है, और इनकी एवोल्यूशन, इसके ऊपर ज्यादा, क्योंकि ये टॉपिक्स पहले नहीं थे। या हम इसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर सारे मॉलिक्यूलर साइंसेस की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो चैप्टर्स है वो भी हमारे लिए एक एक्सटेंसिव है उसमें, लेकिन पहले ये 2 चैप्टर्स खासतौर पे जिसके अंदर एक खासी नई चीजें शामिल हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद फिर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की तरफ आएंगे, और फिर इसी तरीके से हम जो है सीक्वेंस में जो चैप्टर्स, जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैं, जो डिफिकल्ट बच्चे को अंडरस्टैंड
करने में डिफिकल्टी फील होती है, पहले वो पहुंचाएंगे, फिर इसके बाद हम उन चीज़ों को पहुंचाएंगे आप तक जो आसान आसान